नमस्कार जय जगन्नाथ समस्त को विद्यासागर क्लासेस चैनल को समस्त को वेलकम। सो आज आमर नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम पाई बोली जो एमसीक्यू सीरीज रे आमे क्वेश्चन डिस्कशन करूथिले पुणी आ गोटे टॉपिक रो आ गोटे नुआ चैप्टर रो या फिर आ गोटे नुआ कंटेंट रो किछटा एमसीक्यूज मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज आज आमे डिस्कशन करबा जोटा कि होची जेमिति कि तमे जानि पारथिबो ड्रग एंड एंटीडोट हैला। ड्रग एंड एंटीडोट को ड्रग हमर दिया जाउची आ कोन ता पई बोली एंटीडोट अछि से सब जिंस मध्ये आमे देखिबा आज रो क्लास रे। टोटल ऑफ 50 एमसीक्यूज रहिबो 50 एमसीक्यूज रहिबो आ प्रतिटी एमसीक्यूज रे निहाती भाबरे एवरी एमसीक्यू आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर तो निहाती भाबरे तमे आज 50 एमसीक्यू ताठवारी अधिका या फिर आमे जदी आमे तार कंटेंट रे रिलेटेड किछि एमसीक्यूज माने तार कंटेंट रिलेटेड किछि जदी आमे अन्य ऑप्शंस रिलेटेड जदी कंटेंट सॉल्व करछे त माने आउ दि तीनटा क्वेश्चंस मध्ये हमरे एटा गोटे एका संगे सॉल्व हिजिवो। ठीक अछि तो थैंक यू सो मच एवरीवन। गुड मॉर्निंग जय जगन्नाथ हैला। गुड मॉर्निंग। तो स्टार्ट करिबा क्लास स्टार्ट करिबा। एवरीवन जॉइन फर्स्ट। Everyone join first. How's your health? Thank you Hemant. I'm fine. Kali to better अच्छी much better. Thank you. ठीक अच्छे तो स्टार्ट करिबा आउ डेरी करिबानी स्टार्ट करिबा हैला। फर्स्ट क्वेश्चन a patient receiving unfractionated heparin develop severe bleeding, which antidote should the nurse administer? heparin देगिरी ओके सॉरी हेपारिन देगी अनफ्रैक्शनेटेड से डेवलप करछि कोन सीवियर ब्लीडिंग। तो सीवियर ब्लीडिंग को हमको रोकिबार अछि सीवियर ब्लीडिंग को रोकिबार अछि तो कौन करबा सेडा रे प्रोटामिन सल्फेट विटामिन के आइडारुसिजुमैब ना ट्रानेक्सामिक एसिड कौन हबो हेमंत सुचिस्मिता। यस प्रोटामाइन सल्फेट ए वेरी गुड। एडा गोटे हमर कोन जे प्रोटामाइन सल्फेट ता कोन ना प्रोटामाइन सल्फेट इज द स्ट्रांगली बेसिक प्रोटीन। प्रोटामाइन सल्फेट इज अ स्ट्रांग बेसिक प्रोटीन जोटा कि हमर ई जो अनफ्रैक्शनेटेड हेपारिन गोटे एसिडिक सब्सटेंस ता सहित हमर स्ट्रांगली बाइंड करिगिरी से न्यूट्रलाइज करि दोछि हैला। स्ट्रांगली बाइंड करिगिरी न्यूट्रलाइज कर दोछि बा गोटे स्टेबल इनएक्टिव कॉम्प्लेक्स गोटे फॉर्म करछि जोटा कि एंटीकोआगुलेंट इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर दोछि हैला। तो प्रोटामाइन सल्फेट ता कोन गोटे स्ट्रांगली बेसिक प्रोटीन टा जोटा कि हमर आ सहित बाइंड करिगिरी गोटे कोन सॉल्ट कॉम्प्लेक्स टे फॉर्म करछ सॉल्ट कॉम्प्लेक्स गोटे फॉर्म करछ। ठीक अछि तो हियर इज क्वेश्चन नंबर 1 ऑप्शन नंबर ए प्रोटामाइन सल्फेट। क्वेश्चन नंबर 2 a patient on warfarin therapy presents with an INR of 8.5 and active gastrointestinal bleeding. Which medication is the specific antidote? Deferoxamine, vitamin K, atropine, naloxone. कौन हबो क्वेश्चन नंबर 2 वेरी गुड एवरीवन। ठीक अछि ए हबो बबीता। हां हाँ बी चित्त लक्ष्मी प्रिया। यस इट इज विटामिन के फाइटोनाडियोन हैला। दिस क्वेश्चन is a patient receiving morphine becomes unconscious with a respiratory rate of 6 per minute. Which drug should be administered immediately? Flumazenil, acetylcysteine, naloxone, calcium gluconate. Calcium gluconate. आंसर विल बी हियर naloxone हैला। naloxone टा कोन एक्चुअली naloxone टा कोन ना गोटे ओपोइड रिसेप्टर टा से हैला। ओपोइड रिसेप्टर रो एंटागोनिस्ट से जे कि मॉर्फिन को डिस्प्लेस करिगिरी से रिसेप्टर को से बाइंड करछि प्रॉपर बाइंडिंग करे दोछि मॉर्फिन को डिस्प्लेस करे दोछि एज अ रिजल्ट ऑफ व्हिच नॉर्मल ब्रीदिंग हमरो जनरेट हे पारछि। ठीक अछि तो naloxone टा कोन
ना opioid receptor antagonist? Next question. Which antidote is used to reverse the severe benzodiazepine overdose? Protamine sulfate, digoxin immune FAB, fomepizole, na flumazenil. Opioid antidote, yes. Hmm. It is D. D. Sarojini Suchasmita. ठीक अच्छे. Flumazenil. अब flumazenil ला कौन? Flumazenil ला बोली कौन बोली को हमें? Flumazenil is a competitive benzodiazepine receptor antagonist. है ना? Benzodiazepine हाँ receptor antagonist. तो obviously तार antagonist आर overdose को सी antidote भला काम करिवो ना antidote भला काम करछि. Next. Which antidote is recommended for acetaminophen or paracetamol poisoning? N-acetylcysteine, naloxone, pralidoxime, na atropine. A Sarojini Lakshmi Priya Chitta cysteine and acetylcysteine जे कि कौन करछि ग्लूटाथायोन को रिफ्रेश करछि बा रिप्लेस करछि लिवर रे हैला कौन होछि ना एन acetylcysteine एटा कौन करछि replenish the glutathione stores in the liver हैला. Next. Next. Which a patient developed digoxin toxicity with ventricular arrhythmias? Which antidote should be administered? Protamine sulfate, digoxin immune fab, sodium bicarbonate, na vitamin K. And acetylcysteine, yes. Patient developed digoxin toxicity with ventricular arrhythmia. Which antidote should be administered? It is digoxin immune fab हैला एटा गोटे एंटीबॉडी टा जोटा कि डिगॉक्सिन सहित बाइंड करूची हैला ता सहित बाइंड करूची आ तार टॉक्सिसिटी को बॉडी रो रिमूव करूची. ठीक अछि पूनम लक्ष्मीप्रिया शुभश्री ठीक अछि. नेक्स्ट. In organophosphate poisoning, which drug reactivates the acetylcholinesterase? Acetylcysteine, pralidoxime, deferoxamine, flumazenil. Yes, yes. B. Lorina Chita. हाँ. It is pralidoxime. हैला pralidoxime. B हबो. A D को क्वेश्चन टा कहउछ कि को क्वेश्चन टा कहउछ ए बी टा कहउछ ना को बी टा कहउछ जे क्वेश्चन नंबर कोडा कहउछ तमे. It is pralidoxime. हैला pralidoxime. ठीक अछि. Next. Which antidote is preferred for methanol poisoning? Methanol poisoning. Yes. एबे को हाँ
एट्रोपिन एसिटाइलसिस्टीन अच्छा 7 टा अच्छा हो एडा होची कोन 8 मिथानॉल पॉइजनिंग which antidote is preferred for methanol poisoning naloxone atropine fomepizole na protamine sulfate एडा हिजबा कोन ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 8 fomepizole हैला एडा कोन competitive inhibitor of alcohol dehydrogenase हैला it is a competitive inhibitor of alcohol dehydrogenase next which antidote is used in iron poisoning आयरन पॉइजनिंग ही जाऊँगी डेफेरोक्सामिन है डेफेरोक्सामिन और क्वेश्चन नंबर 9 ऑप्शन नंबर डी द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 which antidote is recommended for cyanide poisoning calcium gluconate protamine sulfate naloxone hydroxycobalamin 9 d question number 10 डेफेरोक्सामिन एटा जीव कोन सियानाइड पॉइजनिंग पई हाइड्रोक्सोकोबालामाइन हैला हाइड्रोक्सोकोबालामाइन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 which vitamin acts as the antidote for isoniazid toxicity pyridoxine vitamin C folic acid vitamin E which vitamin acts as the antidote for isoniazid toxicity it is A vitamin B6 pyridoxine very good next question which drug should be administered first in a patient with severe organophosphate poisoning presenting with bronchiria and bradycardia pyridoxine atropine activated charcoal sodium bicarbonate कौन ହେଇଛି ना which drug should be administered severe organophosphate poisoning आउ ता रिलेटेड रे माने organophosphate poisoning हेबा जोगु ब्रोंकेरिया आउ ब्रैडिकार्डिया देखा जाउची को ड्रग ता ताकर एंटीडोट भला काम करिवो प्रेलिडॉक्सिन एट्रोपिन एक्टिवेटेड चारकोल सोडियम बाइकार्बोनेट हैला सोडियम बाइकार्बोनेट तो ए केस रे एट्रोपिन इज द बेस्ट ड्रग दैट शुड बी एडमिनिस्टर्ड जहा को हमर organophosphate poisoning हेई कि हमर ए सब सिम्पटम्स उडा को देखा जाउची करेक्ट नेक्स्ट आसा क्वेश्चन Next as isoniazid causes peripheral neuropathy. So it is vitamin B6. Yes. ठीक ଅଛି. Which medication is used for recurrent hypoglycemia caused by sulfonylurea overdose? Recurrent hypoglycemia माने blood glucose level टा body रे कमी जाउची. Blood glucose level is lowered caused by sulfonylurea overdose. Vitamin K, protamine sulfate, octreotide, ना flumazenil. Now flumazenil. Question number 13. एडा होची कोन octreotide हला एडा गोटे होची कोन long acting somatostatin that works कौन करची ये somatostatin रे सी हमरो long acting somatostatin बोली कहले सी analog that works analog to and which suppresses the insulin activity हैला somatostatin एटा छाड़ काटी दियो हैला ये कौन करची ना suppresses the insulin activity next question Which drug reverses the effects of non-depolarizing neuromuscular blocking agents? Naloxone, digoxin immune FAB, pyridoxine, na neostigmine. Subhasri, good morning.
Raman C, Lorina, aspirant C. कौन बेटा क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन नंबर 14 डी डी नियोस्टिग्माइन हैला ये करूची कौन दिस नियोस्टिग्माइन it decreases the breakdown of acetylcholine in the neuromuscular junction. It decreases the breakdown of the acetylcholine in the neuromuscular junction. Okay, neostigmine. Question number 14, option number D. Question number 15. Which antidote is indicated for methanoglobinемia? Methylene blue, atropine, fomepizole, na hydroxycobalamin. Question number 15. Question number 15, option number A. Hello? Number 15, option number A. Methemoglobinемia रो हमर एंटीडोट होची मिथिलिन ब्लू जे कि करूची कोन से हमर गोटे रिड्यूसिंग एजेंट भला काम कोचे जा द्वारा कि फेरिक आयन टा हमर फेरस रे कन्वर्ट हे परची Fe3 आयन टा हमर Fe2 रे कन्वर्ट हे परची एटा कोन गोटे एक्सेलरेटिंग एजेंट टा reducing in nature. ठीक next 16 which antidote is recommended for ethylene glycol poisoning? Ethylene glycol poisoning question number 16 हाँ ठीक है आशा सुचिस्मिता मामली अनीता it is fomepizole है ना fomepizole तो एडारे कौन होची फॉर्मिपिजोल करूची कौन सी अल्कोहल डिहाइड्रोजनस एंजाइम रे एक्टिविटी को इनहिबिट कर दोची हैला inhibits the activity of alcohol dehydrogenase हैला next question number 17 which therapy is considered the antidote for local anesthetic systemic toxicity calcium gluconate sodium bicarbonate 20% lipid emulsion digoxin immune FAB it is 20% lipid emulsion हैला which therapy is considered for LAST last 20% lipid emulsion is recommended. Next question number 18 which antidote is used in hydrofluoric acid poisoning vitamin K naloxone pralidoxim na calcium gluconate hydrofluoric acid poisoning कौन हो कैल्शियम ग्लूकोनेट रो हमर कैल्शियम आयन रिलीज होची जे कि ए जो फ्लोराइड आयन सहित एक्टिवली बाइंड करिगिरी फ्लोराइड आयन सहित हमर एक्टिवली बाइंड करूची आउ से तार जो हाईली रिएक्टिव फ्लोराइड आयन रो एक्टिविटी को से हमर न्यूट्रलाइज करि पारुची हैला हाईली एक्टिव फ्लोराइड आयन्स रो एक्टिविटी को से हमर न्यूट्रलाइज करि पारुची Next question answer question number 18 है 19 which medication is the antidote of choice in severe beta blocker overdose glucagon flumazenil atropine vitamin K 18 है D very good स्वप्ना लक्ष्मी प्रिया शुभश्री चंदन अनीता 18 है 19 19 A. Glucagon? Yes. Which medication is the antidote of choice in severe beta blocker overdose? It is
Glucagon. A. Yes. Next question also. For 20, which medication is commonly used in calcium channel blocker overdose? Calcium channel blocker overdose. Tikke fast kariba. Huh? Protamine sulfate, naloxone, calcium gluconate, digoxin FAB. Which medication used for calcium channel blocker? Hela. Calcium channel blocker ପାଇଁ ବୋଲି ସେଇ ଆମର calcium gluconate. Calcium gluconate. ठीक ଅଛି. Question number 20. Question number 20 done. Hela. Chalo, next question. Yes. C. Which medication is the treatment of choice for tricyclic antidepressant overdose with widened QRS complex? Widened QRS complex. Yes, 20C. Smita Hemant. ठीक अछि. Sodium bicarbonate, vitamin K, deferoxamine, na flumazenil. Which tricyclic antidepressant overdose ଆଉ QRS complex ମଧ୍ୟ white ହେଇଯାଇଛି. तो QRS complex white ହେଇଛି ବୋଲି କହିଲେ जोटा कि हमर डिपोलराइजेशन टा स्लो होउची ବୋଲି जणा पडुची. डिपोलराइजेशन टा हमर स्लो होउची ବୋଲି जणा पडुची. आ सेटा स्लो होउची ବୋଲି कहले आमे कोन करि परिबा से केस रे सोडियम बाइकार्बोनेट दिया जाए. ठीक अछि. ए अनिता ठीक अछि. इट इज सोडियम बाइकार्बोनेट. नेक्स्ट. Which chelating agent is used in lead poisoning? Which chelating agent is used in lead poisoning? Pyridoxine, calcium disodium EDTA, digoxin FAB, na pralidoxime. Pralidoxime. Question number 22. It is calcium disodium EDTA. है calcium disodium EDTA. ठीक एटा गोटे हेवी मेटल चेलेटिंग एजेंट. Heavy metal chelating agent. Next question. Which antidote is indicated in arsenic poisoning? Arsenic poisoning. Naloxone, hydroxycobalamin, dimercaprol, na vitamin K. Lakshmi Priya, Mamali, Chandan, Raman, Anita, ठीक अछि. सुचिस्मिता. Open. It is dimercaprol. It is dimercaprol. ठीक अछि. 23 टा 23 टा सी हबो. एडा को हमर आउ कोन मते कोहा जाउची. एडा को हमर ब्रिटिश एंटी लेविसाइड बोली मते कोहा जाय. नहीं ब्रिटिश एंटी लेविसाइड. Next. Which rescue medication is administered with high dose methotrexate therapy? Which rescue medication is administered with high dose methotrexate therapy? Acetylcysteine, protamine sulfate, atropine, leucovorin, na folinic acid. Hmm. 24 टा हेमंत XYZ सुचिस्मिता D ल्यूकोवोरिन. ल्यूकोवोरिन ठीक अछि. उपेंद्र मैम ANM पई क्लास करूचंती. को ANM माने बुझि पाइलिनी ना कोन पूजा आम पई ना कोन. Which antidote is specifically developed for colchicine toxicity? Colchicine toxicity. Vitamin K, flumazenil, digoxin FAB, colchicine specific FAB antibodies. आम कौच ना ANM माने जो मिडवाइफरी सेड़ा कहूच कि सेड़ा पचार कि उपेंद्र. हाँ
D. ठीक अच्छे. Colchicine specific FAB antibodies. Done. Next, a patient receiving dabigatran develops life-threatening bleeding. Which specific reversal agent should the nurse anticipate? Idarucizumab, protamine sulfate, vitamin K, andexanet alpha. Andexanet alpha. ANM nursing ପାଇଁ ସେ ଯୋଉ mid nursing ପାଇଁ ତ ଏମିତି ତ ସେମିତି କିଛି it starts YouTube ରେ ହିଁ start ହବ ହେଲା YouTube ରେ start ହବ କଣ ହେଇଯିବ ଏଇଟା dabigatran idarucizumab ହେଲା idarucizumab चलो next question so question number 27 which antidote is specifically indicated for rivaroxaban or apixaban overdose with major bleeding naloxone andexanet alpha protamine sulfate na flumazenil flumazenil answer habo kono एडा ପାଇଁ बोली antidote andexanet alpha ठीक अछि केबेठू मे बी मोस्ट प्रोबेबली आफ्टर ऑगस्ट 15 ऑगस्ट पर हैला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आसो क्वेश्चन नंबर 28 which antidote is recommended for severe magnesium sulfate toxicity presenting with respiratory depression sodium bicarbonate atropine calcium gluconate digoxin immune FAB digoxin immune FAB it is question number 28 C calcium gluconate yes calcium gluconate next question where a patient develop cholinergic toxicity after neostigmine administration which medication should be given immediately pralidoxim pyridoxine leucovorin na atropine okay whenever it starts you will be intimated WhatsApp group रे तमे माने intimate हबो कि असुविधा नै हैला सेटु जाना पड़िबो तो एडा हैला कोन आंसर क्वेश्चन नंबर 29 द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 29 is atropine option number D next which medication is used as an antidote for severe insulin induced hypoglycemia when IV access is unavailable glucagon dextrose 50% octreotide diazoxide Question number 30. Severe insulin-induced hypoglycemia. Hypoglycemia? Glucagon. Hela? Glucagon. A. Subhashri. Next. Which antidote is used for copper poisoning with Wilson's disease? Copper poisoning and Wilson's disease. Deferoxamine, penicillamine, calcium EDTA, dimercaprol. Dimercaprol. Hmm. 31 it is penicillamine हैला penicillamine चलो next question जिबा which chelating agent is preferred in mercury poisoning hydroxycobalamin methylene blue dimercaprol sodium thiosulfate yes yes it is which chelating agent is used or preferred in the mercury poisoning it is dimercaprol hela dimercaprol 32 C Subhashri XYZ next 33 which antidote is used in severe cyanide poisoning as a part of the traditional cyanide antidote kit which antidote is used in severe cyanide poisoning as a part of the traditional cyanide antidote kit vitamin K sodium nitrite naloxone protamine sulfate question
इट इज सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट करेक्ट आंसर है 33 टा सी। ग्रेट, ठीक अच्छे, थैंक यू। नेक्स्ट आस, which antidote is recommended for severe fluoride toxicity causing hypocalcemia? Calcium gluconate, pyridoxine, digoxin immune FAB, acetylcysteine. It is sodium nitrate, sodium कौन बोला? हाँ हाँ अरे एटा सोडियम नाइट्रेट तो सॉरी लाणी सेडा देखि आउरी कहूची एटा कोन हबो व्हिच एंटीडोट इज रिकमेंडेड फॉर सीवियर फ्लोराइड टॉक्सिसिटी कॉजिंग हाइपोकैल्सेमिया? इट इज calcium gluconate, calcium gluconate, option number A. Next, a patient accidentally receives an excessive dose of methotrexate. Which rescue therapy is indicated? Activity charcoal, atropine, leucovorin na flumazenil? कौन बो 35 हाँ 34 टा ए स्वप्ना ठीक अच्छे 35 इट इज सी है ल्यूकोवोरिन आ ल्यूकोवोरिन को हमर आउ कोन भी कहवा जाउची फॉलिनिक एसिड ये कौन एक्ट करची इट एक्ट्स एज अ रिड्यूस्ड folate that bypasses the metabolic block है it acts as a that bypasses the metabolic block caused by methotrexate inhibitor. Methotrexate inhibitor of DHFR. DHFR टा कौन? DHFR रो फुल फॉर्म कौन? इट इज डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज। DHFR है डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज। ठीक अच्छे। नेक्स्ट, which antidote is used in severe albumin toxicity in patients undergoing dialysis? Deferoxamine, penicillamine, succimer na dimercaprol? Folinic acid, yes. Which antidote is used in severe albumin toxicity in patient undergoing dialysis? It is deferoxamine. Now deferoxamine amar kono एडा it is used as a chelating agent, used as a chelating agent primarily for car overdose, primarily for iron overload किंतु ये आमर aluminium सहित बाइंड करी aluminoxane फॉर्म करिवो है aluminoxane फॉर्म करिवो as a result of which and during the in patients with end stage renal disease a complex टा filter हेगी remove ही परिवो high flux dialyzer membrane द्वारा, high flux dialyzer membrane द्वारा ये हमरा remove भी हे परिवो। तो ये हेगला कोन ना deferoxamine। Next, which antidote is indicated for hydroxychloroquine poisoning with cardiotoxicity? Hydroxychloroquine poisoning with cardiotoxicity. Digoxin immune FAB, diazepam, high-dose, atropine na glucagon? It is diazepam high-dose. It is diazepam high-dose. आ सहित हमर एपिनेफ्रिन मध्ये यूज हे पारे क्लोरोक्विन बा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन रो टॉक्सिसिटी को रिड्यूस करिया पई बोली सेटा मध्ये हमर एज ए एंटीडोट यूज हे परबो। नेक्स्ट,
A patient develop extrapyramidal symptoms after metoclopramide administration. Which drug should the nurse expect to administer? Protamine sulfate, benztropine, vitamin K, calcium gluconate. 38 question. It is B. Yes, Mamali. Benztropine. Benzotropine. Next. Which medication is the antidote for severe cholinergic toxicity? Acetylcysteine, naloxone, physostigmine, na flumazenil. Flumazenil. It is physostigmine. Hela, एडा कौन? एडा होची गोटे tertiary amine acetyl cholinesterase inhibitor that can effectively cross the blood brain barrier. है blood brain barrier को मैंने effectively cross करिगरी acetylcholine cholinesterase acetyl cholinesterase receptor सहित से आमर कौन inhibitor करि परिबो ठीक अछि पूरा tongue twister हे जाउची acetyl cholinesterase. Oh, next question number 40. Which antidote is preferred for snake bite with systemic envenomation? Systemic envenomation. Vitamin K, tranexamic acid, hydrocortisone, na polyvalent anti-snake venom. Polyvalent anti-snake venom. आज प्राय क्वेश्चन एलिमिनेशन मेथड यूज करी आंसर देइछि. वेरी गुड हेमंत. हैला वेरी गुड. किछि माने तमरो जदी माने कोनोसी क्वेश्चन तमरो जदी डाउट रहउछि हैला आसुनी ताहाले इमिति दीटा तो ऑप्शन निहाती थिबो हैला ना. दीटा ऑप्शन तो निहाती थिबो जो दीटा ऑप्शन की तमे एलिमिनेट करि परिबो हैला कि एटा तो ऑब्वियस हबनी ही ए क्वेश्चन रो आंसर सेटा को फर्स्ट कट करिवो हैला कट करिवो तापरे आउ जो गोटे दीटा रहिला कि तीनटा रहिला माने दीटा न हेले नै गोटे तो एलिमिनेट करिवो. तमे जो हमर 25% रेशियो रे गोटे गेस करथांदो एबे सेडा रेशियो रे बढ़ी गला ना नै परसेंटेज ऑफ गेसिंग रे बढ़ी गला ना नै तो चांसेस ऑफ गेटिंग इट करेक्ट आउ टिके बढ़ी जाउची. तो एलिमिनेशन मेथड इज द बेस्ट मेथड दैट यू कैन यूज हैला जते बळे आंसर क्वेश्चन आंसर आसुनी हैला. नेक्स्ट आसो कोन एडा स्नेक बाइट विथ सिस्टमिक एनवेनोमेशन. It is polyvalent anti-snake venom. Yes, very good. 40 ta hela D. Which antidote is used for severe carbon monoxide poisoning? 100% oxygen, hyperbaric oxygen therapy, sodium nitrite, hydroxycobalamin, na pralidoxin. Yes. आउ जो आखि बुझा आमे चारटा रु गोटे गेस मारिबा तो 25% हमर रहिला ना नै चांसेस हैला. दीटा रु गेस मारिबो बोली कहले 50% चांस रहिला तो हमर गेटिंग इट करेक्ट हैला. 50% चांसेस आर देयर फॉर गेटिंग इट करेक्ट. चलो सिवियर कार्बन मोनोक्साइड पॉइजनिंग पई बोली आमे कोन देई परिबा सॉरी yes 100% oxygen or hyperbaric acid. Hyperbaric oxygen therapy. Take A Swapna Lakshmi Priya. Next question number 42. Which antidote is indicated for severe fluoride induced ventricular arrhythmias? Sodium bicarbonate, calcium chloride, pyridoxine, leucovorin. Which antidote is indicated for severe fluoride induced ventricular arrhythmias? It is calcium chloride. It is calcium chloride. 100% oxygen. Take achi Lorina. Next aso question number 42 he gala 43. Which drug is used to reverse severe methotrexate toxicity due to delayed clearance? Digoxin FAB, flumazenil, glucarpidase, na atropine.
कौन हम क्वेश्चन नंबर एटा हूँ 43 यस 43 सुचिस्मिता 42 डन 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 43 डाला शुभश्री सी यस ग्लुकारबिडिस डन सी ग्लुकारबिडिस नेक्स्ट क्वेश्चन आस 44 which antidote is administered in severe hydrogen sulfide poisoning severe hydrogen sulfide poisoning question option number 1 hela naloxone pyridoxine vitamin K na sodium nitrite severe hydrogen sulfide poisoning it is sodium nitrate है सोडियम नाइट्रेट जोटा कि आमर मिथेमोग्लोबिन रो फॉर्मेशन को इंड्यूस करिगिरी सी आमर से टॉक्सिसिटी बा से पॉइजनिंग टाको से रिमूव करे पारुची बॉडी रे सोडियम नाइट्रेट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 a patient develops severe dystonia after haloperidol administration which medication is indicated benztropine glucagon acetylcysteine hydroxycobalamin dystonia develops severe dystonia after haloperidol administration yes डी एडा हला कोन एडा होचे बेंस्ट्रोपिन ऑप्शन नंबर ए इटी करेक्ट आंसर हे जबा हैला ऑप्शन नंबर ए हियर इज द करेक्ट आंसर 45 a next question also 46 which antidote is recommended in severe methemoglobinemia due to dapsone toxicity when methylene blue is contraindicated sodium bicarbonate ascorbic acid or vitamin C calcium gluconate na protamine sulfate एडा हम कौन विटामिन सी एडा मते गोटे हमर रिड्यूसिंग एजेंट भले काम करबो रिड्यूसिंग एजेंट भले काम करबो हैला नेक्स्ट क्वेश्चन which antidote is used in severe chromium poisoning which antidote is used in severe chromium poisoning penicillamine succimer deferoxamine dimercaprol which antidote is used in severe chromium poisoning penicillamine deferoxamine succimer na dimercaprol yes 47 raman subhashri it is dimercaprol है chromium poisoning pain dimercaprol next question number 48 which medication is used to neutralize the excessive fibrinolysis after alteplase therapy in life threatening bleeding calcium chloride glucarpidase hydroxycobalamin na tranexamic acid it is question number 48 कौन हम डी शुभश्री yes लक्ष्मी प्रिया डी और 47 बी हाँ ठीक अच्छे डी डन ठीक अच्छे tranexamic question number 49 which antidote is used for arsenic at gold poisoning succimer DMSA penicillamine calcium EDTA na protamine sulfate it is succimer DMSA ठीक अच्छे succimer DMSA raman ठीक अच्छे next question number 50 and the last question for the day which antidote is specifically used in severe digitalis toxicity causing hyperkalemia and ventricular dysrhythmias vitamin K atropine sodium bicarbonate na digoxin immune FAB ठीक तो ए क्वेश्चन रा आंसर कौन हबो लास्ट क्वेश्चन last question it is yes it is digoxin immune FAB hela digoxin immune FAB so that is it for today thank you so much everyone thank you so much I hope एटा ए सेशन ता तमाना पई बोली हेल्पफुल थिबो एमिति आउरी सेशंस आगु को आसिया को जाउची
ठीक अच्छे आहरी सेशंस आगू आसिया जाऊँगी ऑल many most of them have already been scheduled in the channel already schedule ହେଇକିରି ଅଛି but also ଆମର ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ WhatsApp ଗ୍ରୁପରେ ଯୋଉଟା ଆମର ଅଫିशियल WhatsApp ଗ୍ରୁप ଅଛି ନର୍ସିଂ ଅଫିସର ବ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ବୋଲି ତାର ଲିଙ୍କଟା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଏବେ as soon as the live ends ମୁଁ ତାକୁ ଆଟାଚ୍ କରେଇଦେବି ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ଭିଡ଼ିଓ ତଳେ ଠିକ୍ ଅଛି ତମେ ସେଇଟାରେ ସବୁ ଇନଫର୍मेशन जहाँ सब नोटिफिकेशन ऑल्सो ए पीडीएफ क्लास रो पीडीएफ नोट्स गुड़ाक तुम से व्हाट्सएप ग्रुप रे प्रोवाइड कर दिया ठीक अच्छे तो सेशन केमी लगे निहाती मत कमेंट सेक्शन रे जनइबे आउ लाइक करदे थैंक यू सो मच एवरीवन जय जगन्नाथ।